क्लीं तर्जनीभ्यां नमः। ओम क्लौं मध्यमाभ्यां नमः। ओम क्लैमनामिकाभ्यां नमः। ओम क्लौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम क्लः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाके वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरणे कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाणे निर्व्याकुलं स्रस्तनिबद्धने विविलसा गोपी सहस्रावृतं हस्तान्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अष्टम स्कंदः प्रथमोऽध्यायः। अष्टम स्कंद प्रारंभः अथ प्रथमोऽध्यायः। ओम प्रथमोऽध्याय राजोवाच स्वायं भुवस्य गुरुवंशोऽयं तिस्तराच्युता यत्र विस्मृजां सर्गो मनुनन्यान् वदस्वन् यत्र यत्र हरे जन्म कर्माणि च महीयसा गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मास्तानि नो वद शृण्वताम् यद्यस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् भगवान् विश्वभावना कृतवान् कुरुते कर्ता यति तेनागतेद्यरवा। ऋषिवाच मनवो अस्मिन् व्यतीताता षड्कल्पे स्वयं भुवादया आद्यस्ते कथितो यत्र देवादीनां च सम्भवा आकूत्या देवहूत्यां च दुहित्रोत्रस्य वै मनो धर्मज्ञानोपदेशार्थं भगवान् पुत्रतां गता कृतं पुरा भगवता कपिलस्यानुवर्णितम् आख्यास्ये भगवान् यज्ञो यच्चकार कुरुद्वः विरक्ता कामभोगेषु शत्रुपापति प्रभो विसृज्य राज्यं तपसे सभार्यो वनमाविशद सुनन्दायां वर्षशतम् पदैकेन भुवं स्पृश तप्यमानस्ततो पौरमिदमन्वा भारत। मनोर्वाच येन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयते नमायम यो जागर्ति शयानस्मिन्नायं तं दिव्येदवेदसा मम आत्मावश्यमिदं विश्वं यद् किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा कृता कस्य सुजनं यं न पश्यन्ति पश्यन्तं चक्षुर्यस्य न हृष्यति तं भूतनिलयं देवं न यस्याद्यन्तौ मध्यं च स्वापरो नान्तरं वहि विश्वस्यामुनि यद् यस्माद् विश्वं च तदिदं महत् स विश्वकाया पुरोहूतैः सा सत्या स्वयं ज्योतिरजः पुराणा दत्ते सृजनमाद्यजयात्मशक्त्या तां वेद्ययो निरीहयास्ते अताग्रे ऋष्या कर्माणि हन्तो कर्म हेतवे ईयमानो हि पुरुषः प्रायो निहां प्रपद्यते ईयते भगवानीशो न हि तत्र विसज्जते आत्मलाभेन पूर्णार्थो न वसीदन्ति येनुतं तमीहमानं निरहं कृतं बुधं निराशिषं पूर्णमनन्यचोदितं निक्षियन्तं निजवर्णसंस्थितं प्रभुं प्रपद्ये किल धर्मभावन्। श्रीशुकवाच इति मंत्रोपनिषदं व्याहरन्तं समाहितं दृष्ट्वा सुरा यातु दाना जगधूमभ्यग्रवन्तुदा
तांस्तथा वसितान् वीक्ष्य यज्ञ सर्वगतो हरि या मयि प्रतिवृतो देवै हत्वा सा सततिविष्टपम् स्वरोचिषो द्वितीयस्तु मनोरग्रे सुतो भवत् द्युमत्सुसेन रोचिस्मत्प्रमुखास्तस्य चात्मजा तत्रेन्द्रो रोचनास्त्वासीत् देवश्च दुषितादया ऊर्जस्तम्भादया सप्त ऋषयो ब्रह्मवादिना ऋषिस्तु वेदशिरसस्तु तुषिता नाम पत्न्यभूत् तस्मां तज्जे ततो देवा विभुरित्यभिश्रुता अष्टाशीति सहस्राणि मुनयो ये तृतव्रता अन्वशिक्षन् व्रतं तस्य कौमार ब्रह्मचारिणां तृतीय उत्तमो नाम प्रियव्रत सुनो मनु पवनासृञ्जयो यज्ञ होत्राद्यस्तत्सुता नृप वसिष्ठतनया सप्त ऋषिया प्रमदादया सत्यवेद श्रुता भद्रा देवा इन्द्रस्तु सत्यजेत् धर्मस्य शून्यतायां तो भगवान् पुरुषोत्तमा सत्यसेनति ख्यातो जाता सत्यव्रतैः सह शून्यतव्रत दुष्वशतो राक्षसान् भूतद्रोह भूतगणास्त्वमदीत सत्यजित्सखा चतुर्थ उत्तम भ्राता मनुर्नाम्ना च तामसा पृथुख्याति नराकेतुरित्याद्यादस्य तत्सुता सत्यका हरयो वीरा देवास्त्रिशतईश्वरा ज्योतिर्धामादया सप्त ऋषियस्तामसिन्तरे देवा वैदर्तो नाम वेदर्तिस्तनया नृप नष्टाः कालेन यैर्वेदा वेदर्ता स्वेन तेजसा तत्रापि जज्ञे भगवान् हरिण्यां हरिमेधसां हरिरित्याहतो येन गजेन्द्रो मोचितो ग्रहात् राजवाचो बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छा वहि वयम् हरिर्यथा गजपतिं ग्राहग्रहस्थममुचत तत्कथा सुमत्पुण्यं धन्यं स्वस्तेनं शुभं यत्र यत्रोत्तमश्लोको भगवान् गीयते हरि सूतवाच परीक्षितैवं सतुपादिरायणी प्रायोपविष्टेन कथा सुचोदिता उवाच विप्रा प्रतिनन्द्य पार्थिवं मुदा मुनीनां सदसि स्मृणवतां जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे स्कन्धे मन्वन्तरानुचरिते प्रथमोत्सवा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ द्वितीयोत्सवा श्रीशुकवाच आसीत् गिरिवरो राजस्त्रिकुटिविस्तृता चिरोधीनावृता श्रीमान् योजनायुतमच्युता तावता विस्तृता पर्यक्त्रिभिः सङ्गैपयोनिधं दिशाकं रोचना नास्ति रौप्याय स हिरण्मयी अन्यैश्च ककुवा सर्वारत्नधातु विचित्रतैः नानादुर्मलता गुल्मैः निर्घोषैः निर्जराम्भसाम् सजावनिज्यावानङ्घ्रि समन्तात् पर्योर्मिभिः करोति श्यामलां भूमं हरिमर्कटास्मभिः सिद्धचारणगन्धर्व विद्याधरमहोरगैः किन्नरप्सरोभिश्च क्रीडद्भिर्जुष्टकन्दरा यत्र सङ्गीतसन्नादैः नाददुर्गुह्यममर्षया अभिर्जागर्जन्ति हरया श्लाघिना परशङ्कया नानारण्यपशुभ्रात सङ्कुलदुर्निलङ्कृता चित्र चित्तद्रुमासुरोद्यानकलनकपिहङ्गमा सरिसरोवेरच्छोदैः कुलिनैः मणिमालिकैः देवस्त्रीमज्जनामासूदसौभराम्बुरनिलतैयुता दस्य दोर्ण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मना उद्यानामृतमन्नानो आक्रीडं पुरयोषितां सर्वतोऽलङ्कृतं दिव्यैः नित्यं पुष्पलद्रुमैः मन्दारैः पारिजातैश्च पाटलाशोकचम्पकैः चूतैः प्रियालैः पनसैः राम्राकतैरपि क्रमक्रमैः नारिकारैश्च करजूर्बीजपूरकैः मधुकैः सालतालैश्च तमालैरसरार्जुनैः हरिष्ठोदुम्बरो विलक्ष्यैः वटाकुञ्चमिव चन्दनैः पिचुमन्दाकोविदारैः सलिलैः सुहृदात्मभिः द्रोक्षोजम्बूभिः
गोभिर्बदर यक्षा भयामलै बिल्वै कपित्तै जम्बैरैवृतो फल्लकादिभिः तस्मिंस्तरा सुविपुलं लसत्काञ्चन पङ्कजं कुमुदोत्पलकल्लारौ शतपत्रेषु योजितं मत्स्यषड्पदनिर्घिष्टं शकुन्तैश्च कलस्वनैः हंसकारणाडवकीर्णं चक्रावै सारसैरपि जलकुक्कुटकूयष्टादात्यूहकूलकूजितं मत्स्यकच्छपसञ्चारौ चलत्पद्मरजापया कदम्बवीतनश्लीन निपतपञ्जुलकैवृतं कुन्दै कुरबकासुकै शिरीषै कुटजेङ्गुदै कुब्जै सूर्णपीयूतिभिर्नागपुन्नागजातिभिः मल्लिकाशतपत्रैः च माधवीजालकादिभिः शोभितां तीरदैश्चान्यै नित्यैर्भिरलं द्रुमैः तत्रैकदा तद्ग्रीकानाश्रया करेणुभिर्वारणयूतपश्चरन् सकटान् कीच वेणुभित्रवद विशालगुल्मं प्रवृजन् वनस्पतीन् यदगन्ध्रमाता धर्यो गजेन्द्रा व्याघ्रादयो मृगा सकटगा महोरगश्चापि भयाद्रवन्ति स गौरकृष्णा सर्वाश्च मर्या ब्रकावराः महिचर्षलस्या गोपुच्छशाला वृककर्कटाश्च अन्यत्र क्षुद्रा हरिणा ससादया चरन्त भीता यदनुग्रहेण सघर्म तप्ता करभिः करेणुभिर्वृतो मदच्युत कलभैरनद्रुता गिरिं करेणा परिता प्रकम्पयन् निषेप्यमाणोलिकुलै मदासनैः सरोनीलं पङ्कजरेणुरुषिता जिग्रन् विदूरन् मदविवलीक्षणा वृतं स्वयूतेन सार्दितेन तत् सरोभ्यपराभ्यामथागद्दुतं विगाय तस्मिन्नमृताम्बुनिर्मलं हेमारविन्दोत्पलरेणुवासितं पपौनिकामं निजपुष्करोद्धृता मात्मानमध्यं श्रपयन् गतक्लमा पुष्करेणोद्धृतशीकराम्बुभिर्निपायनं संस्नपन्यथा गृही गिरणीकरेणो कलभाश्च दुर्मदो नाचष्टे कृक्षं कृपणयोज्यमायया तं तस्य कश्चिन्न प्रदेव चोदितो प्रायो बलीयाश्चरणे रुषाग्रहीत् यदच्च वैवं व्यसनं गतो गजो यथा बलं सोऽति बलो विचक्रमे तथा तुरं यूतपतिं करेणवो विकृष्यमाना तरसा बलीयसा विचक्रसुरदीन धियो परे गजा पाष्णिग्रहास्ता तरितं न चास्कन् नियुध्यतो रेभिर्वेद्रकन्नक्रयो विकर्षतोरन्तरतो बहिर्मिथा समासहस्रं व्यगमन्महीयते सप्राणयो चित्रमसम्मतं परा ततो गजेन्द्रस्य मनोबलौजसा कालेन दीर्घेन महानभूद्व्यया विकृष्यमाणस्य जले वसीदतो विपर्ययो भूसकलं जलौकसा इत्थं गजेन्द्रास यदाह सङ्कटं प्राणस्य देहि विवशो यदिच्छया अपारयन्नात्मविमोक्षणे चिरं दक्षामि मां बुद्धिममाद्यपद्यत नमामि मे ज्ञातयातुरं गजा कुताकरण्या प्रभवन्ति मोचितं ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतो प्यहं च तं यामि परम्परायणं या कश्चनेशो बलिलोन्तरुन्दगुर्गात् प्रचण्डवेगादविधावतो वृषं भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयात् मृत्यो प्रधावत्यऋणं तमीमहि। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टम स्कन्धे मनमन्त्रानुवर्णे गजेन्द्रोपाख्याने द्वितीयोत्सवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अत्र तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुकवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। गजेन्द्रवाच ओं नमो भगवते तस्मै यदेतच्चिदात्मकं पुरुषायात्मबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यइदं स्वयं यस्मात् परमाच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भवं या स्वात्मनीतं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वचित् तिरोहितम् अवेद्यदृक्षाक्षुभयं तदीच्यते सात्ममूलो भवतु मा परात्परा
कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतिषु तस्मस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभो न यस्य देवा ऋषया पदं विदुः जन्तो पुनः को रतिगन्तिमीर्तुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरतयानुक्रमणा समावतु दिदीक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तिसङ्गा मुनया सुसाधवा चरन्तलोकाव्रतमा प्रणम्बने भूतात्मभूतासुरदा समे गति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय या स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय रूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय सौम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रिय गुणदृष्टि सर्वप्रत्यय हेतवे असताक्षाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्ते किलकारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वांगमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणेचिन्नचिदोषपाय तत्क्षो विविस्फूजितमानसाय नैष्कर्म्यभावे निविवर्जितार्गया स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रे प्रपन्नपशुपा विमोक्षराय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो ललाय स्वांसेन सर्वतन्त्रन् मनसि प्रतीता प्रत्यदृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजातग्रहे जने सुसक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामा विमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वा शिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेधाभृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यश्च न कञ्चनानतं वाक्यन्ति एवै भगवत्प्रपन्ना अत्याद्भुतं च चरितं सुमङ्गलं गायन्ते आनन्दसमुद्रमग्ना तमाचरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं शोचिमिवातिदूरं मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरा नाम रूप विभेदेन फलगव्या च कलया कृता यथार्थ शोकने सवितुर्गवस्तयो
निर्यान्ति संयान्त सकृत स्वरोचिषा तथा यतोऽयं गुणसम्प्रभावो बुद्धिर्मनाकानि शरीर सर्गा सवै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न सन्दो न पुमान् जन्तु नायं गुणा कर्म न सन्न्यचासन् निषेधशेषो जयतादशेषा जिजे विषेनाहमियामुया किं मन्त्रिर्वै च वृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्य वेग सत्रित्र्याय अखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कतीन्द्रियाणामनिवाप्यवर्त्मनि नायं वेद्स्वमात्मानं यच्चक्त्यान्दियातं तं दुरत्यमात्म्यं भगवतस्मितोऽस्म्यहम् श्रीशुकवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविधा विमाना नैते यदोपि ससुपुण्यकिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो अविराविरासीत् तं तद्पदार्थमुपलभ्य जगन्निवास तोतं निशम्य दिविजयशय संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन करुणेन समुह्यमान चक्रायुधो भगवता सुयतो गजेन्द्र सोऽन्ता सरेषुबलेन गृहीतयार्थो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिकम् उपाति चक्रम् उच्चिप्य साम्बुजकरं गृहमाह कृच्छान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजा सहसावतीर्य चक्रायमासु सरसा कृपयोज्जहार गृहात् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यता हरिमुमुक्षुस्तु स्त्रियाणां जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्यां संहितायां अष्टम स्कंदे गजर्मोक्षणे तृतीयोत्सवः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ चतुर्थोऽध्याय श्रीशुकवाच तदा देवर्षि गन्धर्वा ब्रह्मशान् पुरोगमा मुमुचु कुसुमासारं सरसं तं कर्म तद्धरे नेदुर्दुन्दुभयो दिव्या गन्धर्वा नन्यतुर्जगा ऋषयश्चारणा सिद्धा तुष्टभो पुरुषोत्तमं योऽसौ ग्राह्य सवै सद्य परमाश्चर्यरूपदिक् मुक्तो देवल शापेनो हुर्गन्धर्वसत्तमा प्रणम्य शिरसाधीशमुत्तमश्लोकमप्ययन् अगाय यशोधामो कीर्तनगुणसत्कथां सोऽनुकम्पिनम् ईशेन परिक्रम्य प्रणम्यतं लोकस्य पश्यतो लोकं स्वमगान् मुक्तिकिल्बिषा गजेन्द्र भगवत स्पर्शनात् मुक्तो ज्ञानबन्धनात् प्राप्तो भगवतो रूपं पीतवासः चतुर्भुजा सभी पूर्वभूत राजा पाण्डव्यो द्रविणः सत्तमा इन्द्रद्युम्न इति ख्यातो विष्णुव्रतपरायणः स एकदाराधनकाले आत्मवान् गृहीतमानो व्रत ईश्वरं हरिं जटाधरस्तापसया प्लुतोच्युतं समर्चयामास कुलाचलाश्रमा यदेच्छया तत्र महायशा मुनि समागगवच्चस्य गणैः परिश्रुता तं वीक्ष्य तूष्णीमकृतारणादिकं रहस्योपासीनमशिलस्य कोपः तस्य इमां शापमदात् साधु रयं दुरात्मा कृतबुद्धिरद्य विप्राभमन्ता विसितां तमोन्दं यथा गजा स्तब्धमति स एव श्रीशुकवाच एवं सत्त्वा गतो गस्त्यो भगवान् नपसानुगा इन्द्रद्युम्नोऽपि राजर्षि तिष्ठतदुपधारयन् आपन्ना कञ्जरी योनिमात्मस्मृति विनाशिनीं हर्यचवर्चानुभावेन यद्गजेत्वेऽप्यनुस्मृति तं विमोक्ष्य गजयूतमजाब्जनाभ तेनापि पार्षद्गतिं गमितेन युक्ता गन्धर्वसिद्ध्य विबुधैरुपगीयमाना कर्माद्भुतं स्वभवनं गरुडासनोगात् एतन्महाराज तवोरितो मया कृष्णानुभावो गजराज मोक्षणं स्वर्गं यशस्यं कलिमलकल्मषापां दुःस्वप्ननाशनं कुरु वर्य शृण्वतां यथानुकीर्त्यच्युते चिर्यस्क्रामादुजातया शुचया प्रातरुत्थाय दुःस्वप्नादुपशान्तये यदमाय हरिप्रीतो गजितं कुरु सत्तमा शृण्वतां सर्वभूतानां सर्वभूतमयो भुवो श्री भगवान वाच यो मात्वं च भारश्चेद गिरिकन्दरकाननं वेत्रवीचकवेणूनां कुलमननि सुरपादनात् शृङ्गाणि सत्यानि ब्राह्मणो मे शिवस्य च चिरोद मे वीर्यधाम स्वीतद्वीपं च भास्वरं श्रीवत्सकौस्तुभं मालं कदं कौमुदिकी मम सुदर्शनं पाञ्चजन्यं सुपर्णं पदगेश्वरं
शेष च मत्कलां प्रोक्तमां श्रियं देवी मदाश्रया ब्राह्मणं नारदमृषिं भवं पर्रातिमेव च मत्स्य कूर्मपरारातेरवतारे कृतानि मे कर्मण्यनन्त पुण्यानि सूर्यं सोमं हुतासनं प्रणवं सत्यमव्यक्त गोपप्रान् धर्ममव्ययं दाक्षाणी धर्मपत्नी शोककस्योपयोरपि गंगायां सरस्वती नंदा कालिंदी सीतावरणं ध्रुवं ब्रह्मऋषीन् सप्त पुण्यश्लोकाश्च मानवान् उत्थाय पररात्रित प्रयता सुसमाहिता स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यते येन सौकिलात् यो मा स्तुवन्त्यनीनाङ्ग प्रतिबुद्ध्य निशात्यै तेषां प्राणात्यै चाहं ददामि विमलामतिं श्रीसुखवाच इत्यादि श्रीकेश प्रथमाय जलमोजोत्तमं हर्षयन् बहुधानीकमारुरोह गगाधिपं जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्यां संहितायाम् अष्टम स्कन्धे गजरमोक्षणो नाम चतुर्थोत्सवः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। श्रीशुकवाच राजन्ननुतमे तन्मे हरे कर्मागनाशनं गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं रैवतं त्वन्तरं शृणु। पंचमो रैवतो नाम मनुस्तामसोदरा बलविन्द्यादयस्तस्य सुता अर्जुनपूर्वका भुवोरेन्द्रा सुरगणा राजन भूतर यादया हिरण्यरोमा वेदसुरा ऊर्ध्वबाहवादयो द्विजा पत्नी वैकुंठ शुभ्रस्य वैकुंठ सुरसत्तमयि तयो सुकलया यज्ञे वैकुंठ भगवान् श्रियं वैकुंठा कल्पितो येन लोको लोक नमस्कृता रमया प्राचमनिना देव्या तत्प्रिय काम्या तस्यानुभावा कथितो गुणास्य परमोदया बहुमानेर्नो विममे यो विष्णुर्वर्णयेत् गुणान् षष्ठस्य चक्षुषा पुत्र चक्षुषो नाम वै पुनः पुरुष सुद्युम्न प्रमुखाश्चक्षुषा स्मता इंद्रो मंद्र इंद्रमस्तत्र देवाप्यादयो गणा मुनयस्तत्र वैराजन् हविस्मत् वीरकामदया तथापि देव संभूत्या वैराजस्य भवसुता अजितो नाम भगवान् अंशेन जगदापति पयोधियेन में निर्मत्य सुराणां साधिता जुता ब्रह्ममाणो मसीदता कूर्मरूपेण मंदरा राजवत यदा भगवता ब्रह्मन्मतिता क्षीरसागरा यदर्थं च यतश्चाद्रिधराचम्बुजरात्मना यथावृतं सुरैराप्तं किञ्चिदन्यद् भवता तदा एतद् भगवता कर्म वदस्व परमाद्भुतं तस्या संख्यमातेन महिम्नो सात्वतां पति नाभितर्प्यति मे चित्तं सुचिरं तापतापितं सूतवाच समृष्टो भगवान् एवं द्वैपायन सुतो द्विजा अभिमनन्द हरेर्वीरमभ्यजष्टो प्रचक्रमे सुखवाच यदायुधे सुरै देवा बाध्यमाना सीता बुधै गतासवो निपतिता नोदतिष्ठन् भूयसा यदा ध्रुवासता सापासेन्द्रा लोकाश्रयो नप निश्रीकाश्च भमस्तत्र नेसुरित्यादया क्रिया नैषामैतसुरागण महेन्द्रवरुणादया नादे गच्छन् स्वयं मन्त्रस्यन्तो विनिश्चितं तयो ब्रह्मसभां जगमो मेरुमूर्धनि सर्वसा सर्वं पिङ्काभया चक्रो प्रणता परमेष्ठिना साविलोक्येन्द्रियवाप्यादीन् निसत्त्वान् विगतप्रमान् लोकान् मङ्गलप्रायान् अनुसुरन् यथा विभु समाहितेन मनसा संस्मरन् पुरुषं परम् उवाचोत्फुल्लवदनो देवांश भगवान् नरा अहं भवो यूयमतो सुरादयो मनुष्यतिर्याद्रुमघर्मजातया यस्यावतारान् सकला विसर्जिता व्रजामि सर्वे शरणं तमभयं न यस्य वद्यो न च रक्षणीयो नेप्योक्षणीया धरणीयपक्षा अथापि सर्गचितिसंयमार्गं दत्तिरजासत्वममासि काले अयं च तस्य स्थितिपालनरक्षणा सत्त्वं जुषाणस्य भवाय दीनां तस्मात् ब्रजं शरणं जगद्गुरुं स्वानां सनोदास्यति सुरप्रिया श्रीसुखवाच इत्यावास्य सुरान्वेदस्य देवैरनिन्दितं रचितस्य पदं साक्षात् जगाम तमसा परं तत्त्वादिस्वरूपाय सुतपूर्वाश्रयं कलमप्रतज्ञं मन्योग्रयाणां वचसा निरोक्तं नमामि
महीते विवरं वरेण्या विपश्चितं प्राणमनोधियात्मना मरेतेन्द्रियावास्यमनेत्रमप्रणं छाया तपोय तृणकृत्यपक्षौ तमच्चरेकं त्रियुगं व्रजामहे अजस्य चक्रं त्वजयेयमाणं मनोमयं पञ्चदशार्मासु तृणाभिभेद्यो चलमस्तनेमि यदक्षमावतमृतं प्रपद्ये एकवर्णं तमसा परं तद्लोकमव्यक्तमनन्त्यपारम् आसञ्चकारो सुवर्णमयेन मुपासते योग रथेन धीरा न यस्य कश्चित् माया यया जनो मोहि यदि वेदनार्थं तं निर्जितात्मा गुणं परेश न नाम भूतेषु समचरन्तम् इमे वयं यत् प्रिय एव तन्वा सत्त्वेन श्रेष्ठा बहिरन्तरावि गतेन सूक्ष्मा मृत्यस्य वेद्महे कृतो सुराद्या इतरा प्रधाना पादौ महीयं स्वकृतैव यस्य चतुर्विधो त्रयीभूत सर्गा स वै महापुरुषात्मतन्त्रा प्रसीदतां ब्रह्मविभूति अम्बतु यद्रे देवदार्य वीर्यं सिद्ध्यन्ति जीवत्युतवर्धमाना लोकत्रयोता किल लोकपाला प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूति सोमं मनो यस्य समामनन्ति दिवौकसां वै वलमन्दयायो ईशानगानां प्रजानां प्रसीदतां न समाविभूति अग्निर्मुखं यस्य तु जातवेदा जाता क्रिया का निमित्तजन्म अन्ता समुद्रे नृपचन् स्वसाधु प्रसीदतां न समाविभूति यचक्षुरासीत् तरणे देवयानां त्रयीमयो ब्राह्मणयेष देशं द्वारं च मुक्ते रमृतं च मृत्यु
प्रसीदतां न समाविभूति प्राणादभूदय चराचराणां प्राणासहो मोजस्य वायु अन्वाससाम्रा विमनानुगावयं प्रसीदतां न समाविभूति श्रोतादितोय चरितस्य खानि प्रजागिरेकां पुरुषस्य नाभ्या प्राणेन्द्रियात्मा सुशरीरकेतो प्रसीदतां न समाविभूति बलमहेन्द्र त्रिदशा प्रसादान् मन्यो गिरीशो दिशनाद्विरिञ्च क्षिप्यश्च चन्दा ऋषयो मेटात्रदका प्रसीदतां न समाविभूति श्रीवक्षसा पितर रसछाययासना धर्मास्तनादितरा पृष्ठतो दौर्यस्य शिष्णु सरसो विहारात् प्रसीदतां न समहाविभूति विप्रोमुखं ब्रह्मचर्यस्य गुह्यं राजन्यासीत् भुजयो बलं च ऊर्वो विडोजोऽङ्घ्रिपरेदशूद्रौ प्रसीदतां न समहाविभूति लोभो धरात्प्रीतिरूपे पर्यभूद्युति नस्तापसभ्य स्पर्शीन कामा ब्रवोर्यमापक्षमवस्तु कालो प्रसीदतां न समहाविभूति द्रव्यं वयं कर्म गुणान्वेदं प्रत्योगमाया वेतान् वदन्ति यद दुर्विभाव्यं प्रबुदापवादं प्रसीदतां न समहाविभूति नमोस्तु तस्मा उपशान्तशक्तये स्वराज्यलाभ प्रतिपूरितात्मने गुणेषु माया रजतेषु वृत्तिभिर्न सज्जमानाय नभस्वदूतये सत्वं नो दर्शयात्मानमस्मत्कर्णगोचरं प्रपन्नादिरुक्षणं सस्मितं ते मुखाम्बुजं तेस्तैः स्वेच्छादितैरूपैः काले काले स्वयं भवो कर्म दुर्विषं यन्नो भगवत्सत्करोति न करोति हि क्लेशभूर्याल्पसाराणि कर्माणि विफलानि वा देहिनां विषयवार्तानां न तथैवार्पितं त्वयि नावमाकरकल्पोऽपि विफलैश्वर्यार्पिता कल्पते पुरुषस्यैव यात्मा दयितो हिता यथा स्कन्दशाखानं तरोमूलवसेचनम् एवमारार्दिनं विष्णु सर्वेषामात्मनश्चै नमस्तुभ्यमनन्ताय दुर्वितर्कात्मकर्मणे निर्गुणाय गुणेशाय सत्त्वस्थाय च साम्प्रतं जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टम स्कन्धे अमृतमन्थने पंचमोत्सवाः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ षष्ठोऽध्याय श्रीशुकवाच एवं स्तुता सुरगणैः भगवान् हरिरीश्वर तेषामाबुद्भूतराजन् सहस्रार्को दैतद्युति तेनैव महसा सर्वे देवा प्रतिहताक्षणा न पश्यन् खं दिशोचोनिमात्मानं जगतो भयं विरञ्चो भगवान् दृष्टा सहस्रमेण तां तनुम् स्वक्षामरकथस्यामं कञ्चकरवारुणेक्षणं तप्त हिमवदादीन लसत्कोशेवासनं प्रसन्नचारु सर्वाङ्गी सुमुखे सुन्दरप्रभं महामणिक्रीतेन केयूराभ्यां च भूषितं कर्णाभरणनिर्भात कपूल श्रीमुखाम्बुजं काञ्चीकलापवलयहारनूपुरशोभितं कौस्तुभामरणं लक्ष्मीप्रतिवनमालिनं सुदर्शनादिविश्वस्त्रीमूर्तिमद्विरुपासितं दुष्टाविदेव प्रवर सस्पा पुरुषं सर्वमरगणैः साकं सर्वाङ्गैरवनिं ब्रह्मवाच अजात जन्मा स्थिति संयमाया गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय रणोरणिम्ने परिगण्य धाम्ने महानुभावा य नमो
नमस्ते रूपं तवैतत् पुरुषर्षभेद्यं श्रेयोतिभिर्वै दिक्तान्त्रकेन योगेन दाता शयनस्त्रलोकान् परमस्मिन्नय विश्वमूर्तौ त्वयाग्र्यासि त्वयमध्ययासि त्वय्यन्त्यासि दिदमात्मतन्त्रे त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यं घटस्वमित्स्ने परा परस्मात् त्वं माययात्माश्रयया स्वयेदं निर्माय विश्वं तदन प्रविष्टा पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो गुणाव्यवाये प्रगुणां विपश्चिता यथाग्निमेधा स्मृतां च गोषु गोप्यान्नमभ्यो द्यमने च भृत्यं योगै मनुष्या अधियान्ति त्वां गुणेषु बुद्ध्या कवयो वदन्ति तं त्वा वयं नाति समोजिहानां सरोजनाभाति चिरेप्सितार्थ दृष्ट्वा गतानिर्वृत्तिमद्य सर्वे गजादवार्ता इव गाङ्गमम्बा सा त्वं विदस्ता किल लोकपाला वयं यथार्थस्तव पादमूलं समागतास्ते बहिरन्तरात्मन् किं वा निवेद्याप्यमशेष साक्षिणा अहं गिरित्याश्च सुरादयाये दक्षादयोग्ने ऋवगीतमस्ति किं वा विदामि सपृथग्विभाता विदास्तु सन्नो द्विजदेवमन्त्रम् श्री सुखवाच एवं विरञ्चादिविरीडतस्तत् विद्या इति संहृदयं तथैव जगादजीमूतकबीरया गिरा बद्धाञ्जलि संवृत सर्वकारन् एवमेवेश्वरस्तस्मिन् सुरकार्ये सुरेश्वरा व्यर्थो कामस्थान समुद्रो मथनादिभिः श्रीभगवानुवाच हन्त ब्रह्मणो सम्भोहेति वासमभासितं शृण्वावेता सर्वे श्रेयो वास्यात् यथा भ्रा याता तावनेति दैवत् सन्द्रविधीयतां कालेनानुगृहीतैस्तयो यावदो यो भवात्मना हरयोपि सन्ध्यया सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूषकवद्देवायर्थस्य पदवीं गति अमृतोत्पादने यत्र क्रियतामभिविलम्बता यस्य पीतसवे जन्तो मृतग्रस्तो मरो भवोत् त्यक्त्वा चिरो ददौ सर्वा वीरतृणलौ सदिवि मन्दानं मन्दर कृत्वा नित्यं कृत्वा दुवासुगिं सायेन मया देव निर्ममन्त ध्वन्मतन्द्रिता क्लेशवाजो वस्यन्ति देव्या युवं फलग्रा युवं तदनुमोदत्वं यदिच्छन्त्यासुरासुरा सरम्भेण विसिद्ध्यन्ति सर्वेता सान्त्वया यथा न भेदव्यकालकूटात् विसाज्जलति सम्भवात् लोभाकार्यो नमो जातो कोशा कामस्तु वस्तुतो श्री सुखवाच इति देवान् समादेश्य भगवान् पुरुषोत्तमा तेषामन्तर्दधे राजन् स्वच्छन्दगतिरीश्वरा अति तस्मै भगवते नमस्कृत्य वदामः भवश्च जगमतो स्वं स्वं धामोपेवरमलिं सुरा दृष्ट्वा रीनप्यसंयन्तान् जातविशोभान् स्वयनकान् कानकान् विनिषीदन्ते राजश्लोक्या सन्धि विग्रहकालवित् देवे रोचनामासीनं गुप्तं चासुरीयुतभै श्रिया परमया जुष्टं चिदासीसमुपागमन् महेन्द्रलक्षणया वाचा शान्तयित्वा महामति अभ्यभाषतं सर्वं शिक्षितं पुरुषोत्तमं तद्रोचतु दैत्यस्य तत्रानेश्वराधिपा सम्भरोरिष्टनेमिच्च च त्रिपुरवासिना तदुदेवासुरा कृत्वा संविदं कृतौरिदा उद्यमं परमं चक्रो रामृताति परन्तप तदसि मन्दगिरियो मूजसोत्पाटयतु
दुर्मदा ददन्तमुददीनन्यो सक्ता परे गभावा दूरभावोद्भयश्रान्ता सक्रे वैरोचनादया अपारयतस्तं बोधं विभसा बीजौषधि निपस्तं क्रीतश्च बहुमन्दारदानवान् चूडयामास मेता भारेण कनकाचला तास्तदा भग्नमनुषो भग्नबाहुरुगुरुकन्धरा विज्ञाय भगमासत्र बभू करुणध्वजा गिरिपातनिविष्टिष्टापिष्टान् लोक्यामरदानवान् ईश्वराजीवयामासो निर्जनान् निर्विणान्यथा गिरिं चारोप्य गरुडे हस्तनेकेन लीलया आरोहे प्रभया भक्तिं सुरासुरगणैर्वृता अवरोप्य गिरिं स्कन्दात् सुपर्णा पतिताम्बरा यो जलान्तोत्सृज्य हरिणा सा विसर्जिता। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कन्धे मन्द्राचल अमृतमथने मन्द्राचलायनं षष्ठोत्सवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सप्तमोत्सवः श्रीशुकवाच तेनागराज मामन्द्र बलभागेन वासुकिं परिवेग्रह तस्मिन्नेव मन्त्रे सुदान्विता हरिभिर्विषु संयन्ता अमृताद्वा कुरुद्वा हरिपुरस्तग्रहे पुरं देवा ततो भवत् तन्यक्षन् दैत्पतयो महापुरुषचेष्टितं न गृणीमो भयं पुच्छ महे रङ्गममङ्गलं स्वाध्यायसु